आपकी डायरी में तो बहुत सी चीजें नहीं है, कॉल डिटेल्स भी नहीं है जो कि खरे साहब ने फाइल की है। जी नहीं, आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना सिखाएंगे? जब आपको सिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप लोगों को तकलीफ होने लगती है। आपका इन्वेस्टिगेशन करना हमें सिखाना पड़ेगा क्या? बुलवाइए आपके आईओ को। आप लोग इतनी लग्जरी मत दिखाइए। स्टेट आपका कंडक्ट बहुत डाउटफुल रहता है हर जगह। अगर हमने इनकी क्लास लेना चालू कर दिया तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, फिर आप भागते हैं रोस्टर बदलवाने के लिए। ऐसा मत करिए। आप लोगों को तनख्वाह दी जाती है नागरिकों का काम करने के लिए। I said there's something that government educate, they are not prepared. I'm not against him or anyone. It's not about Amit. It is not I said this before one of the court. The court said, when you take a retirement, go for the coaching class. It was shocking. No, sir, it's not the attitude. It was a shocking attitude by the court. No, sir. तो मुझे कहना पड़ा कि साहब सीखने की कोई मन नहीं होती है कि नहीं आपके हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। नहीं, हम लोग आप लोगों से ज्यादा सीखते हैं। जब हमें बेहतर असिस्टेंस मिलती है तो हमारा बेहतर जजमेंट आता है। जानती हूँ ये लेटर पढ़ के आप दोनों पागल हो चुके होंगे, लेकिन उम्मीद है मेरे जाने के बाद भैया आकर जरूर आप दोनों को संभाल लेंगे। 28 साल की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, अब नहीं हो पा रहा है। जा रही हूँ सबको छोड़कर, रहूँगी आपके पास, लेकिन बस साथ नहीं रह पाऊँगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट है, मेरे सुसाइड को कोई ऐसा वैसा रीज़न नहीं है। मेरे सुसाइड का कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जो भी कर रही हूँ खुद की मर्जी से कर रही हूँ। थैंक यू लाइफ में हर उस इंसान को जिसने मुझे सहारा दिया है। मम्मी पापा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे शांति से दफन दीजिएगा, मुक्ति दे दीजिएगा। किसी को परेशान नहीं करिएगा, ना खुद परेशान होइएगा। थैंक यू हर खुशी देने के लिए। प्लीज़ किसी को ना कुछ बोलिए ना कहिए। हर किसी से रिक्वेस्ट है, लेट मी गो पीसफुली। ये जो आपके क्लाइंट हैं, जी, इनकी डेट ऑफ मैरिज क्या है? सर, इनकी एंगेजमेंट हुई है 14/7/2021 को। 14/7/21 एंगेजमेंट। 14/7/21 और उसके बाद मैरिज हुई है 29/11/21। 29/11/21। अच्छा, और डेट ऑफ सुसाइड क्या है? शी कमिटेड सुसाइड ऑन 5/12/21। 5/12/21 जी, आफ्टर माय मैरिज जी। Then the mark statement of the father were recorded on 8/12/21. हाँ, वो कहाँ है? So this is at page 100 to 103. And the tower location which is there from 29/11, my lord, that is continuously at Satna. अच्छा। The call records have been filed from 29/11 by the prosecution, and from 29/11 continuously the tower location is at Satna only. जहाँ से शादी हुई है। राइट, राइट, बताइए। No, my lord. The aforesaid circumstances, my lord, I rely upon some of the judgments, my lord. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जी जी। सो इसमें पैराग्राफ 2, 4, 12, 13 and 17. पैरा 2, 4. जी। 2 is only for the reason by the impugned order the respondent accused was discharged of the charge framed against them under section 306 read with 34 of the penal code. The victim, daughter of the de facto complainant, was a painter and artist. To improve her proficiency in English, first respondent was appointed as an English teacher. Respondent number 2 and 3 are his parents. They developed intimacy between the victim and the first respondent in the course of coaching. It is allegation of the complaint that as the deceased victim and the first respondent had decided to marry, to finalize the proposal of marriage, the victim had gone to the house of the first respondent on 5/3/2004. It is alleged that when the victim went to the house of the first respondent, the respondent number 2 and 3, or the parents of the first respondent, came out to raise shouts and address the victim as a call girl. The words uttered by the respondent number 2 and 3, as per the de facto complaint, are, "You are a call girl. Why my son would marry you? We would give our son in marriage elsewhere." It is alleged in the complaint that at the time the first respondent did not protest against the version of his parent, and his daughter returned home and became mentally perturbed. On 6/3/2004 at about 1 p.m., the victim had committed suicide. This was the case, my lord. Here, the circumstances are not such, my lord, that I had given no option but for her to commit suicide, my lord. There's nothing existing. In my case, there is no one is saying that I had ever intended to marry or I refused for marriage. This is also not the case. So, my lord, under the circumstances and the facts on record, 306 is not made out as surrogate records. Yes, my lord. Okay. And one thing, my lord, the call records from 29 they filed, the entire tower location is at Satna. नहीं, but
कॉल रिकॉर्ड्स के एक्सचेंज है दोनों के बीच में नहीं है? है सर, है कॉल रिकॉर्ड्स की एक्सचेंज। जी जी हाँ, so we are not disputing that we are not friendly with each other, or we are not talking in talking terms with her. And she had also sent a congratulatory message to my wife, my lord. अच्छा That message is also there. Page 165 page, sir. It is not part of charge sheet. They filed it, madam. Page 165. 165 Though it is not part of charge sheet, madam. जी ठीक So this is a message. जी जी Hi Swiksha, congratulations for your wedding. पेज नंबर This is at page 165, sir. As part of annexure. P5, sir. P5 P5, sir. ओके This is of course not the part of charge sheet, sir. जी 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 This is on 3rd of December 2021. राइट यस मतलब इसके फादर के बयान में मोबाइल नंबर जो आया वो उन्हीं का है और उस पर बातचीत होती रही। ठीक है ये है। और मिलोड जो हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था, कंप्लेंट दी थी थाना प्रभारी महोदय को मिसरौद में, जी उसमें बोला था मिलोड इसमें 3 सिम लगी थी, उसमें एक सिम गायब थी, तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी कोई। ये तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कहाँ आए हैं? क्वेश्चन के लिए आए हैं उसमें? मिलोड जो कब चालान दिया था पेश आपने होगा उसके पत्र? पहले हमने कंप्लेंट दी। कब दिया था पत्र? ये दिया annexure? था आपने रिटर्न 24 जनवरी 2022 को। रिटर्न के साथ लगाया होगा ना आपने? इसी में है मिलोड, किसके साथ? रिप्लाई में लगा है मिलोड। हम आपके रिप्लाई में? मिलोड यस और बताइए। पेज नंबर 12 का मिलोड देख लिया जी। ये बताएंगे ना सरकारी वकील साहब, तीसरी सिम कहाँ गई? There is nothing in this regard in the diary, your lordship. आपकी डायरी में तो बहुत सी चीजें नहीं है, कॉल डिटेल्स भी नहीं है जो कि खरे साहब ने फाइल की है। जी नहीं तो आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना सिखाएंगे? जब आपको सिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर आप लोगों को तकलीफ होने लगती है। कॉल डिटेल्स तो है। उन्होंने बोला ना कॉल डिटेल्स उन्होंने फाइल की हैं। नहीं, call details are part of the charge sheet. I said they are part of जो the charge. मैसेज भेजा था उसने वो भी नहीं है जी। हाँ, वो नहीं. वो नहीं। क्यों नहीं है? आपका इन्वेस्टिगेशन करना हमें सिखाना पड़ेगा क्या? बुलवाइए आपके आईओ को, Your lord. फाइल एफिडेविट ऑफ योर आईओ। देखिएगा, श्री अनिल खरे लर्नेड सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री लाल हितेंद्र सिंह। नेक्स्ट श्री अमित शर्मा लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट श्री प्रशांत श्रीवास फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 4। During the course of argument, Sri Prashant Srivas has pointed out that 2 complaints were given to the SHO and the Inspector General of Director General of Police as are available on page 11 and 12 of the return filed wide IA number 2944 of 23, in which it is mentioned that deceased Sudhashri was using 3 mobile phones. Full stop. Out of these 3 mobile phones, 2 were of touch screen type and 1 was button system. Full stop. SIM in the button system type mobile was missing. Full stop. No action has been taken by the police in regard to the said complaint. Next para. Shri Amit Sharma submits that there is no such mention in the charge sheet. Next para. It's a serious matter that when complaint was given, then police was duty bound to investigate. Let's Judgement. पुलिस कमिश्नर का एफिडेविट बुलवाना है क्या? नहीं ये आपके क्या कर रहे हैं आपके ये? आयोग का बुलवा नहीं, आयोग let का police commissioner Bhopal आयोग- file personal affidavit that why the IO of the case, that is SHO police station Misrod, has failed to act on the complaint, and if he had acted then what action was taken by him on the complaint which is available on record. Let affidavit of the police commissioner be filed within 3 days. 7 days time may be given, your lordship. 7 days कर दीजिए, 7 days.
list in the week commencing 18 दिसंबर 2023. Your Lordship. Your Lordship, he may supply the copy of objection to me here. Return इसमें लगा हुआ है. जी. There is a presumption that Your you can always take a printout of the return and the documents. आप लोग इतनी लग्जरी मत दिखाइए. स्टेट आपका कंडक्ट बहुत डाउटफुल रहता है हर जगह. Your Lordship, we will. योर ऑफिसर्स आर, अगर हमने इनकी क्लास लेना चालू कर दिया तो आप दिक्कत में आ जाएंगे. फिर आप भागते हैं रोस्टर बदलवाने के लिए. हमें मालूम है क्या होता है आपके लेवल पर. But there's an interim order in this case. हाँ, IR if any to continue. We will comply with it. ऐसा मत करिए. आप लोगों को तनख्वाह दी जाती है नागरिकों का काम करने के लिए. Your Lordship. ठीक है. Your Lordship. आप लोगों की जो गतिविधियां हैं वो सब एक्सपोज होती है इन सब चीजों से. Your Lordship. केस का फेट छोड़ दीजिए. जो भी होगा केस का फेट, दिस वे दैट वे, यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट. यू शुड बी इंटरेस्टेड इन असिस्टिंग द कोर्ट प्रॉपरली. Your Lordship. Abhi sir, I should not have said over here. I said this something that government advocate, they are not prepared. I'm not against him or anyone. It's not about Amit. It is not. I said this before one of the court. The court said, when you take a retirement, go for the coaching class. It was shocking. No, sir, that is not the attitude. It was a shocking attitude by the No, court. sir. With all respect to anybody, I don't know who said it. The thing is that something is when pointed out and it is corroborated from the record, then we should not take it lightly. And this was I said you better confirm it from Jyotri or somewhere else. How many lectures have I delivered? Nahin. Before saying all this, Sir, it pains us very much. We are not talking about individuals. I have no problem. Therefore, I gave an instance. I did not give an incident. I did not name anyone. Yes. It was very painful And for me. even I thought I should never go. Speaking for Amit Sharma also, he has been assisting me Yes, sir, for he's very long. good. He's very good. He is always well prepared. लेकिन केस डायरी में नहीं है तो वो उनकी क्या क्या करेंगे? गलती है? वो गलती वहाँ है. हाँ है, इसीलिए उनके बारे में कहा जा रहा है. आपने सही बताया सर. इसीलिए पुलिस कमिश्नर का बनाया कि कम से कम पुलिस कमिश्नर साहब देखें तो उनके मातहत मैंने क्या कर रहे हैं. उस दिन मुझे कहना पड़ा कि साहब सीखने की कोई मन नहीं होती है कि हाँ, नहीं आपके हम आपसे ठीक सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं. नहीं, इट इज म्यूचुअल एंड हम आपसे ज्यादा और सीखते मुझे हैं. उस दिन पहली बार लगा कि नो, आई शुड नॉट गो टू एनीवेयर, आई शुड नॉट गो एनीवेयर फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स. नहीं सर, ऐसा नहीं है. और मैं एक बात बता दूं, हम लोग आप लोगों से ज्यादा सीखते हैं. जब हमें बेहतर असिस्टेंस मिलती है तो हमारा बेहतर जजमेंट आता है. हम वकीलों से ही सीखते हैं. इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रीड. आपने जो है 8 जजमेंट का कंपाइलेशन दे दिया, मैं इसको ढूंढने में मेरे को 2 दिन लगते. ठीक है, तो अब हमारी रिसर्च भी आसान हो जाएगी. जी. तो हम तो वकीलों से ही सीखते हैं.